Good morning, students. The list. So today we will discuss some more programs of list. सर सैंपल पेपर करवा दो एक बार फिर से कोई और करवा दो Beta, I have discussed all the question of list. Beta, ओके नहीं मैं क्या करूँ कोई और है तो वो भी करवा दो I am checking if there is any other question. Just wait for me. ओके There are some basic questions are there, beta. So let us discuss that. First question is find the invalid identifiers. बेटा हमने डिस्कस किया था इन identifiers. These are user defined names. So there are some rules regarding that. It can't be a keyword. Second one is it can't start with a number. We can't give text. Okay? Yes, these type of rules are there. तो इनमें से invalid, तो यहाँ पे break is a keyword. Okay, so that's why it can't become as identifier. So it is a invalid. Otherwise, name section marks 12. Marks 12 is okay. If I am using 12 marks, then it is incorrect because variable name can't be start with the number. Next question. This is not in your syllabus. Next question is there is a one string is given, and if we want to display 1 colon colon 2, what will be the output? Beta, here s colon colon means here s 1 colon colon 2. It means starting from 1. Ending portion is not mentioned here, so it will be up to the end. और हर बार कितने का डिफरेंस होगा 2 का. So it will display W, then C, and then M. W C. सर Sorry, W. W नहीं होगा. Yes, बेटा. सर हाँ, 2 W का के बाद गैप. Yes, 2 का गैप आपके पास है ना. तो आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेटा. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. स्टार्टिंग उसकी 1 से शुरू हो रही है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम E, ठीक है, देन C, देन M. M Yes, E C M. Clear? सर Ishnoor, yes बेटा. सर आपने ना इस बार पेपर में एक डाला था ऐसे ही क्वेश्चन, उसके अंदर ना बीच में भी नेगेटिव था, वैसा करवा दो कोई. एक मिनट. Suppose here S is equal to welcome. Okay. So if we here is a indexing. Then there is a negative indexing, -7. -1. तो मैं थोड़ा सा इसको आई एम अरेंजिंग दिस. मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको. So this is your indexing, positive and negative. So if we are using here 1
colon. So beta, there are three parts of slicing. First is starting position, then ending position, then change in the index. तो हमारे पास starting is 1 पर ending यहाँ पे नहीं दी हुई, तो इसका मतलब up to the end of your string. So starting is 1, 2 का increment, it means first it will display 1 के ऊपर आपके पास E है, then it will display 3, 3 के ऊपर आपके पास L है, और उसके बाद 3 के बाद 5, 2 का increment, then 5th के ऊपर M है. So that's why answer is ECM. Or in case your slicing is तो यहाँ पे -6 हियर, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम -6 मीन्स यहाँ से, और 5 इज हियर, तो 5 से एक स्टेप पहले यहाँ तक, तो आंसर आएगा ECLO. क्लियर बेटा? यस तिशनूर? यस सर. Okay, so according to the your suppose you are using your T -1 colon 2, so in case minus starting position is -1, that is A, or second position is here, but remember one thing, your slicing is always forward, तो पीछे की तरफ नहीं आती. तो अगर आप -1 मीन्स लास्ट एलिमेंट से शुरू कर रहे हो और बैक में नहीं आ सकते, in that case there will be no output. empty लिस्ट आ जाएगी आपके पास, empty आएगा. सर दोबारा समझाना. देखो बेटा, स्टार्टिंग इज -1 यहाँ पे, इट्स क्लियर, यहाँ तक, यहाँ से है ना बेटा? हाँ जी सर. तो हमें कहां तक जाना है? 2 तक. 2 तो बैकवर्ड हो गया. क्लियर? -1 to 2, तो बैकवर्ड कभी नहीं जा सकते. इस केस में -1 नो आउटपुट. बट इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर यूजिंग -1 colon 2 then colon -1, now you are reversing. ठीक है, उस केस में क्या आएगा आंसर? पहले आंसर आएगा E, then M, then O, then L, 3 तक. 2 तक नहीं आएगा, तो आंसर विल बी हियर E, M, O, L. It will be displayed in a reverse order, but up to 3, not 2. 2 तक नहीं आएगा, 1 से 2 से एक स्टेप पीछे की तरफ रहेगा. क्लियर कृष्णूर? यस सर. ओके, एंड सेम इज इन द केस ऑफ लिस्ट. तो लिस्ट में भी सेम होगा. क्लियर? तो टपल्स, स्ट्रिंग एंड लिस्ट, दिस स्लाइसिंग इज सेम. Which of the following is an incorrect logical operators? Incorrect logical operators. Logical operators are and, or, not. तो यहाँ पे in is not a logical operator. Clear, students? Okay. Now next question. There is a one string hello, and you will tell which one is a invalid operation. इनमें से कौन सा invalid operation है? Invalid operation is when we are going to change the content of a string or tuple. Tuple or D option. yes, it is a D option. तो जब भी आप स्ट्रिंग और टपल में कंटेंट्स को चेंज करते हो, दैट इज ए इनवैलिड एक्टिविटी. दिस इज वैलिड इन द केस ऑफ ओनली लिस्ट एंड डिक्शनरी.
Okay, since there is a one operator in and not in, it give the answer in true false. For example, I have one list. ठीक है, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे. Here I am taking 10, 20, 30. If I am using L in 10 in L, it will tell us true because value is there. If I am saying 15 in L, it will give us false. Okay. In the same way, there is a not in. जैसे 10 not in L, तो ये आंसर कहेगा false because 10 exist कर रहा है. ठीक है. और अगर मैं कहूँ 15 not in L, 15 L में नहीं है, yes it is not, तो आंसर true है. So there is a one question कि one dictionary is defined. Clear? एक dictionary define हुई है. तो इस डिक्शनरी में आपके पास कीज हैं और इसकी वैल्यूज हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट कमांड, प्रिंट जॉन इन डी. नाउ टेल मी, डी में जॉन एज ए की है कि नहीं? सर है. यस, तो आंसर इज ट्रू. देन 90 इन डी. सर है. बट नॉट की बेटा, मैं आई एम टेलिंग अबाउट द की. देखो इधर, when you are using dictionary, this is my dictionary, and if you are using A in B, it is checking, it is saying false, क्योंकि ये की चेक करता है. It is not checking the value. ठीक है. If I am using here 1 in D, it is saying true. ठीक है. तो कीज को चेक करना है डिक्शनरी के केस में. तो यहाँ पे 90 is not in D क्योंकि it is not a key, it's a value. इसका आंसर आएगा false. और in between there is a hash symbol is here. तो आंसर आएगा true hash false. Kinjal clear? Okay. Himanshu clear? Okay. Now next question I have already discussed here. सर Yes. सर एक डाउट है. Yes sir. सर ये जो कैपिटलाइज होता है वो क्या करता है? Beta capitalize basically this is a working on your string, but for term 2 of your syllabus there will be no any string program, but plus 2 के लिए benefit है बेटा capitalize. आपके पास अगर हम कोई भी string लेते हैं, suppose here I am using this string, 1 minute बेटा. तो मैं यहाँ पे string ले लेता हूँ s. Okay, if I am using s dot capitalize, तो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज इन ए कैपिटल लेटर. ओके. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कैपिटलाइज, तो इसका मतलब ये हुआ जी आपके पास कैपिटल में हुआ, मॉर्निंग गुड डबल ओ डी स्मॉल एंड मॉर्निंग इज आल्सो इन स्मॉल. पर जब आप टाइटल यूज करते हो, ठीक है, बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग टाइटल मेथड, so in that case first letter of every word will be the capital letter.
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, और सेपरेटर क्या होना चाहिए, हाइफन, हियर इज ए एक्सक्लेमेटरी साइन इज हियर, तो आपके पास ये है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। क्लियर हिमांशु? यस सर, सी होगी। In capitalize, first letter of the string will be capital, but in the case of title, the first character of every word will be the capital letter. ओके एक किलो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Okay, since there is another question. One list is given here, and another is a empty your list. One dictionary given, one empty list. 4 kv in d dot items. तो k और v में क्या आएगा, पहले आपके पास आएगा इसकी वैल्यूज मीन्स आइटम्स 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर वो आपके पास उसका फर्स्ट लेटर e के इक्वल है, ठीक है, देन इट विल बी अपेंडेड इन द लिस्ट। तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में 2 है और 3, तो ये 2 एंड 3 किस में चला जाएगा, इट विल बी गो टू द लिस्ट, एल में चला जाएगा। तो इफ वी डिस्प्ले the L, it will show 2 and 3. Students, clear beta? सर डी ऑप्शन है। Yes, D option. तो इसने क्या किया, आपके पास जो यहाँ से यहाँ पे इन्होंने ये लिखा ना 4k, v, तो v आपके पास जो आपके पास एक, अगर हम ऐसे यूज करते हैं, मैं आई एम गिविंग वन डेमो हियर, वेट 1 मिनट। मेरे पास एक डिक्शनरी है डी, हियर इज 1, so this is your dictionary, ठीक है, then I declare one list, okay। तो मुझे बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, अगर 4 को हम लगाते हैं, एक में आई ले लेते हैं, एक में जे ले लेते हैं, ठीक है, इन पी डॉट आइटम्स। तो आइटम्स बेटा क्या होता है कि इट विल पिक योर रो, योर कीज एंड वैल्यूज, दोनों को पिक करता है, ठीक है। तो दिस इज ए मेथड। तो आपके जब आप डिस्प्ले करोगे प्रिंट आई, ओके, देन प्रिंट जे, so I am implementing this। ये देखो आई में क्या है, सारी कीज आ रही हैं 1 2 3 4 1 2 3, और जे में आ रही है वैल्यूज लाइक 1 2 3, क्लियर। तो देयर आर 2 वेरिएबल्स, वन में आपके पास ये सिर्फ, दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ योर डिक्शनरी। तो इफ यू आर यूजिंग आइटम्स, तो आई में सारी आइटम्स कीज आ गई, जे में सारी वैल्यूज आ गई, क्लियर। और अगर हमने चेक किया कि अगर जो वैल्यूज है उसका फर्स्ट लेटर टी है,
In that case, k को k क्या है? Key. Then we add this key in the list. Okay, concept clear, beta? Yes. Now next is this question we will discuss. Okay. Who will give the answer of this question? Question number 48. There is a one error here. यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है. Okay. देखो बेटा, here one string is clear. But here they are using semicolon. That is again wrong. Clear? So basically this code will generate error. Error क्यों आएगा? Because we are using semicolon here. So in Python, semicolons are not allowed. ठीक है? अगर ये errors ना होती, if we declare these variables in separate line, तो सबसे पहले हमने s की लेंथ फाइंड आउट की. लेंथ ऑफ s इज 3. तो हमने लूप को चलाया 3 टाइम. तो i की वैल्यू 0 1 2. ठीक है. और हमने d के यहाँ पे di और हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी si की. मीन्स l0, ठीक है, इज इक्वल आपके पास वैसे ये सिंटेक्स इज टोटल क्रॉस. बेटा ये दिस विल जनरेट एरर. No need to use this. This is going to generate error. Okay, who will give the answer of question number 49? 49. सर वो क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे जो आप करवा रही थी. बेटा ये सेमीकोलन यूज है ना, एरर आएगी बेटा. ये here they are using semicolon. ठीक है. Vinayak, yes, Vinayak. It will generate error बेटा. अब question number 49. This is linked with list. We have one list L. So D option. मैं भी चेक करूँ बेटा. Second L1. Then there is a append. तो L dot append L1. बेटा जब आप append फंक्शन के साथ मल्टीपल एलिमेंट ऐड करते हो तो नेस्टिंग लिस्ट बनती है. ठीक है. तो ये आपके पास लिस्ट बन गई. अब आपने जैसे append किया 10 20 30 40. 1 मिनट बेटा. तो here L is equal to, जैसे आपने L dot append L1 किया तो L में आपके पास already 10 है, then already 20, and then you append L1. तो L1 में in square bracket it will be 30 and 40. Clear? And when you implemented extend L dot extend L2, तो जैसे ही एक्सटेंड करते हो तो एलिमेंट्स आर नॉट नेस्टेड. ठीक है. सर 30 है. तो आंसर आएगा 50 एंड 60. आपके पास इस तरीके से आंसर आएगा. सर बटन जो नेस्टेड लिस्ट है उसमें 30 40 है. 20 40 जगह पे 1 minute. Yes, it is a 30 40. Very good. Isha, your answer is correct one. D1. D. Answer number D. Next is, so this is now linked with the totally +2 syllabus. So basics में से these are the questions in your syllabus. ठीक है. So we have discussed all the questions. Himanshu, any other? नो सर डाउट तो नहीं है अब. Okay.
Okay, students, now I am introducing tuple. Okay, because in paper, tuple questions and the list questions are in, you can say output programs are there. So there is a very big collection of questions. So tuple is immutable in nature. Clear? When we declare k is equal to, you will use braces and then use different values and use brackets, closing bracket. This is called tuple. But there is a one drawback of tuple is that we can't change the element values. आप element की value को change नहीं कर सकते. Otherwise, slicing is there. आप slicing में same, you can use operator, plus operator, multiply operator, same. In operator, not in operator, same. Okay, but there is a one feature of tuple is that it is immutable in nature. We can't change the value of its element. Okay, so it has a very limited number of functions and methods. Function we can use here, length k, it will tell us how many elements are there. Max k, it is applicable in case all the values are numeric. So it will tell us maximum value. Min, so it will give us minimum value. But if all the elements are numeric in numeric nature, then there is a sum. Sum function will find out if all the elements are of. It will add all the elements if the element values are numeric. Clear? So these are very limited functions we can use, but there are some methods. ठीक है, तो आपके पास कुछ methods भी हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. Methods of your tuple. तो tuples के different methods. ठीक है, तो first is count. ठीक है, so if you are using here k dot count 10, it will give us 1. So how many times the count is in the tuple? Okay. Next is if you are using k dot index of 30, so ये 30 का index बताएगा, that is 1. Okay. Then there is one sorted method. ठीक है, वो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं x is equal to sorted k. तो k को ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके x में कॉपी करते हैं. तो x will be here list, not a tuple. ठीक है, और if you want to in descending order, then reverse equal to true you will have to do. Clear? Any doubt in this?